Good morning, students. Today, on 2nd of July, we all are here to continue with subject physics. Yesterday, while discussing, we discussed about new introduced quantity, moment of inertia. Moment of inertia can be found by integration method. So today we will continue to study the application of that method. We will derive the expression for moment of inertia of a uniform disk. So let us start with the derivation. So today we will find moment of inertia of uniform disk. If any difficulty, if the focus is not clear, let me know, because new technique I am adopting today. So please tell me if any discrepancy. So actually disk, my screen is blurred. I am trying, wait. Is now okay? Is now fine? We'll continue with. I am trying. I think it is much better now. So we'll proceed further. So moment of inertia of a disk. Actually disk is a two-dimensional quantity. Disk is rigid one and it is planar quantity. So disk is a circular two-planar body, rigid from inside, having very small thickness, and everywhere it is rigid. The entire mass is distributed between the distance r is equal to 0 till r is equal to r, where r is radius of uniform disk. What is done while using direct integration method? The entire body is divided into number of small elements nearly of equal masses. So we will assume this disk to be made up of number of concentric rings, concentric disks. Number of concentric means you will consider, if let M be the mass of disk, capital R the radius of disk, O its center, that is point of symmetry. Let it is rotating about transverse axis, that is perpendicular axis, passing through its point of symmetry. Point of symmetry for regular shaped body coincides with center of mass. So symmetric transverse axis it is rotating, ऐसा हम लोग assume करेंगे. Suppose with velocity omega which is constant. What we will do to apply direct integration method? We'll divide this disk into small circular concentric disks. Suppose I will choose one ring disk which is at distance r and this is its mass. ये जो डिस्क है ना वो एंटायर है, तो लेट डी एम बी इट्स मास, लेट डी आर ये जो डिस्टेंस है बी इट्स थिकनेस, ऐसे एज्यूम करेंगे और ऐसे लेट करेंगे. तो अभी क्या करेंगे? लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट and then by using integration method you can find moment of inertia for this entire disk. So if m is the mass of disk, its r is radius, then
mass per unit area of the disk, we will let it as sigma is equal to total mass upon area of the disk. I have started the derivation which is given on page number 14. बुक का पेज नंबर 14 निकालो, उसमें आई एम स्टार्टेड विथ पॉइंट 1.5.2. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्क लिया है ना उसका पहले मास डिटरमाइन करते हैं. सो मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा. सो फाइंड एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डिस्क. तो कितना आएगा, एरिया मीन्स व्हाट, सरकमफरेंस इनटू क्या आता है, थिकनेस. सो व्हाट इज एरिया ऑफ स्मॉल दिस डिस्क टेकन अंडर कंसिडरेशन विल बी circumference 2 pi r into thickness, that is dr. एरिया पाई आर स्क्वायर है तो उसका मास m है. अगर एरिया इतना है तो उसका मास कितना आएगा. सो यू कैन फाइंड मास ऑफ दिस डिस्क बाय मल्टीप्लाइंग dA विथ सरफेस डेंसिटी. उसको सरफेस डेंसिटी बोलते हैं. तो सरफेस डेंसिटी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट विल बी देन 2 pi r sigma into dr. And you know by definition moment of inertia of this ring about the given axis is equal to mass of the ring into square of its distance from axis of rotation. So this will be moment of inertia for this particular selected disk. So entire moment of inertia of the entire disk we can find out by definite integral. Here value of r changes from 0 up to final distance r. So you can integrate it with two limits 0 to r to get moment of inertia of this entire disk under consideration. So you can integrate it. So I can write it as 2 pi r sigma dr, ये dm की वैल्यू हो गई, into r square limit 0 to r. 2 pi is a constant quantity, sigma is a constant quantity, you can take it out. So 2 pi sigma integration r square into r will be r cube into dr, r running from 0 to r. So if you adjust the terms, 2 pi sigma integration will be r raised to 4 by 4, lower limit 0, upper limit r. ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा. देन 0 है तो फाइनल आंसर सॉल्विंग के बाद क्या आएगा, r raised to 4 divided by 4. Substituting the value of sigma over here, you will get final expression r half m r square. So this will be moment of inertia of this entire disk about transverse axis passing through its center, that is center of mass, that is point of symmetry. So such method can be used to find moment of inertia of any shape. Regular body होनी चाहिए, इंटीग्रेबल मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो हम लोग अबाउट अ गिवन एक्सिस वो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिमेट्रिक रेगुलर शेप बॉडी. So this is the method. So many times what happens when we study application, we generally choose the axis passing through center of mass, but it should not be necessary. Sometimes what happens, this disk might rotate about axis, suppose passing through O dash. ये जो सेंटर था, अभी मैंने एक्सिस का पोजीशन चेंज किया और ये एक्सिस के अराउंड डिस्क रोटेट हो सकती है.
So if I want to find its moment of inertia about axis passing through point O dash, we have to follow again the same procedure हम लोगों को follow करनी पड़ती है. That becomes very hectic. And to determine moment of inertia of a given body about any other axis, we can use shortcut use कर सकते हैं. That is using principles of theorems of moment of inertia. So there are two main theorems of moment of inertia which enables us to determine moment of inertia of a body about any other axis than the axis passing through center of mass. उसके हिसाब से IO डैश निकालने के लिए अगर आपको IO मालूम है तो यूजिंग दिस थियरम्स यू कैन फाइंड IO डैश डायरेक्टली. सो मेन टू थियरम्स. First theorem is theorem of parallel axis. I have switched over to the article 1.7.1. 1.7.1 में शुरू किया है. मैंने क्या किया, जब लोग हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं तब इंटीग्रेशन सिमेट्रिक रखने के लिए जनरली वी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ सिमेट्री. बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस. द एक्सिस में पास थ्रू एनी पॉइंट. इट मे बी इंक्लाइन टू द बॉडी. ऐसा भी हो सकता है. Not necessary every time body should rotate about the axis through its center of mass. 1 minute, let me check once again. There is no any chat in the box, so everything is fine. So अभी क्या करते हैं, if I want to find moment of inertia of a body about some other axis, so what is done generally, these theorems are used. So to use the theorems there are certain conditions. Let us discuss that condition first. So this parallel axis theorem is useful for arbitrary shape body. आर्बिट्ररी शेप यानी कि वो प्लेनर बॉडी चाहिए ऐसा नहीं, वो किसी कौन से भी बॉडी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज सेकंड थियरम, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. दैट इज ओनली यूज्ड फॉर प्लेनर बॉडीज, दैट इज लैमिनर बॉडीज, टू डायमेंशनल बॉडीज. सो फर्स्ट विल थिंक अबाउट थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ये हम लोग पहले ही सीखते हैं. सो व्हाट हैपन्स हियर, दिस थियरम इज व्हेन यू वांट टू अप्लाई दिस थियरम फॉर अ बॉडी यू शुड हैव टू एक्सिस. एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. If you know IO by using parallel axis theorem, you can easily find value of IO dash. According to theorem, value of moment of inertia for a body about any axis, that is IO dash in this case, is always equal to the sum of moment of inertia of a body about axis passing through center of mass and parallel to the required axis. जिसके एक्सिस के आर निकालना है उसको parallel axis passing through center of mass, that is IO in this case, and product of mass of a body and square of distance between these two axes. Let it be h, so this will be h square. So according to this theorem I can find IO dash by adding moment of inertia of a body about
पैरेलल एक्सिस, ये एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस पैरेलल होना चाहिए. दिस पेयर यू कैन सिलेक्ट. You cannot select pair IO dash and IO double dash. वो सेंटर ऑफ मास से ही जाता है, लेकिन वो यूज नहीं करना है. हम लोगों को ये एक्सिस पैरेलल लेना है. So if you know IO, you can easily find IO dash without following integration method. This is its mathematical statement. And it is applicable for any shape body. ऐसा कुछ नहीं, वो प्लेनर ही चाहिए. प्लेनर को भी अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग वो इस आर्बिट्ररी को भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस एप्लीकेशंस ऑफ थियरम आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पहले प्रूफ निकाल देते हैं. सो लेट अस कंसिडर द प्रूफ. एक बॉडी लेते हैं. मैं प्रूफ चालू किया है. गो फॉर फिगर 1.15 फ्रॉम द बुक. 1.15 की फिगर है ना, वो देख लो ऑन पेज नंबर 15 मैंने चालू की है. उन लोगों ने क्या किया है, एक बॉडी ली है. लेट सी बी इट्स सेंटर ऑफ मास. दे हैव टेकन वन एक्सिस AB passing through its center of mass and body is revolving. Suppose AB. If body revolves around this axis, let its moment of inertia be IC. They have selected some other point. Let me check. Through point O. ठीक है, सेंटर ऑफ मास उन लोगों ने सी ली है. सेंटर ऑफ मास सी लिया है. I have selected any other point O. O मैंने point लिया है. Any other point. If I want to find IO, suppose body is now revolving about axis passing through O and perpendicular to its plane. ये दोनों axis साथ में होने चाहिए. Let IO its moment of inertia. ये axis का नाम दिया है MP. So you have to prove IO is equal to IC plus M. If distance ये h है, तो by theorem I have to prove IO, moment of inertia about any axis, addition of moment of inertia about axis parallel to given axis but passing through center of mass IC, plus product of mass and square of distance between the two axes. ये हम लोगों को mathematically prove करना है. So we will proceed further with this proof. तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यू हैव टू सिलेक्ट वन एलिमेंट सपोज ऑफ मास dm situated suppose at point D. What I will do, I will draw perpendicular dn on produce OC. OC हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे और D से उसको परपेंडिकुलर डालेंगे. सो अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू C, what will be moment of inertia of this element. अभी एलिमेंट इंटीग्रेशन मेथड यूज करनी है ना, तो पहले हम लोग एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. सो लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O. उन लोगों ने उसका नाम दिया नहीं है, लेकिन वी कैन कॉल इट एज DIC. कितनी वैल्यू आएगी, dm and square of its distance, that is CD square into dm. So moment of inertia of the entire body about this axis IC will be then integration of DIC. बराबर है ना. So that will be then integration CD square into dm. Similarly, moment of inertia of entire body about axis passing through O will be integration. अभी इसका IO के बाजू में moment of inertia निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस OD square into dm. So first find DIO, then DIC. You can directly get ICIO for the entire body about the corresponding axis. Now you can write OD है ना ये वाला IO. We'll start with IO.
OD square into DM। समझ रहा है सब लोगों को? विल प्रोसीड फर्दर। सो OD यानी कि क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ON square plus ND square। ON will be written as OC plus CN। बुक में देखो मैं ये स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, टाइम इज रनिंग, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस स्टेप्स। गो थ्रू द बुक, 15 पेज निकालो। IO ने उन लोगों ने चालू किया, दैट विल बी ON square plus DN square। ON is OC plus CN, so substituting that you will get OC square plus CN square plus 2 times OC into CN। ये ON का बाद में सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये सिंप्लीफिकेशन इधर तक आ जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस NC एंड CO। नेक्स्ट स्टेप देखो बुक में, मैं बुक दिखा रही हूं आप लोगों को, सो यू कैन प्रोसीड फर्दर विद दिस। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज H, अभी OCH है ना, तो OCH मालूम है, तो सिंप्लीफिकेशन इतना आ जाएगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज डेफिनेशन इज ऑलवेज लाइक लास्ट ईयर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने देखा था, तो सेंटर ऑफ मास के यहाँ मोमेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आता है। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू विथ इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू m, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स मास एलिमेंट्स विल बी टोटल मास ऑफ द बॉडी, we will get IO is equal to IC plus mh square। So this theorem enables us to find moment of inertia about any body if moment of inertia of the same body about a parallel axis through center of mass is known to you। If you have axis like this, then you should select axis passing through center parallel to this, then you should know value of IC dash if you want to find value of IO dash। जो एक्सिस है उसका पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको मालूम है, तो ये थियरम यूज करके अबाउट एनी एक्सिस, अगर अबाउट एनी पॉइंट अगर एक्सिस जाता है तो आप लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली निकाल सकते हो। So this is all about, I am asking when this meet will over, I have given the other meet at 10 o'clock, so within 5 minutes you have to switch over and you have to connect with that। हाँ, मैं ही कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो आप लोग ये मीट खत्म होने के बाद वो मीट में ज्वाइन होंगे सब लोग, उसका मैंने डाला है ग्रुप पे। So only 21 participants are there, so that is not good। So the other theorem is, the other theorem is principle of perpendicular axis। It is called theorem of perpendicular axis or principle of perpendicular axis। So that also we can use, but in that case we have to deal with 3 mutual perpendicular axes। ये 3 axes है, both at least 2 should lie in the plane of body and 1 should be perpendicular to the plane of body। That third axis perpendicular should pass through the point of intersection of 2 axes lying in the body। See the diagram in the book। ये देखो अभी ये डायग्राम, 2 एक्सेस, ये वाला एक, ये वाला एक, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी। थर्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी एंड इट पासेस थ्रू O, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 lying in the plane। Okay, so we will proceed further। So we can prove the IZ is equal to IX plus IY। This is mathematical statement of principle of perpendicular axis। Proof is very easy।
you can easily get that proof. The same way we studied the proof for principle of parallel axis. You have to select one element placed at point P. The distance of it from x-axis will be y if its coordinates are x, y. So at point P, you will situate mass element of mass dm. So moment of inertia of this element about x-axis will be y square dm. So a moment of inertia of an entire body about x-axis Ix will be integration dix. That will be integration y square dm. So this will be Ix. Similarly, Iy of element placed at point P diy will be x square dm. So entire body के लिए क्या हो जाएगा? Integration हो जाएगा. If you add both of them, ix plus iy will be then x square plus y square into dm, and x square plus y square will be op square. That is distance of a point from third axis. Let it be r. So that will be then r square dm will be diz. ये तो diz की वैल्यू आ गई. So iz will be integration of diz. That will be then x square plus y square, and this proof you can easily get. Y square dm, x square dm, y square dm is ix and x square dm is iy. So this is mathematical form of moment of inertia. Out of these three, if you know any two values, you can determine the remaining one. So addition of moments of inertia of a body about two mutually perpendicular axes lying in the plane of the body is always equal to moment of inertia of the same body about perpendicular axis passing through point of intersection of these two axes. This is its statement. So state and prove moment theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. That part today we have concluded by concluding the expression for moment of inertia of uniform disk using direct integration method. I will share the notes of this, and you all will write it in the notebook. We study its applications, means we will solve few numerics based on in next lecture. So I am closing this meet just now. You have to join the new meet for my next lecture. You join the other meet within 5 minutes.